Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Hisam Academy. This is me, Sumal Rizvi, an English language fluency expert. And today, once again, I am here to teach you advanced English level phrases, idiomatic structures, or phrasal verbs. And this is going to be part number 2. Because in my last video, I provided you 10 different advanced English level expression. And in this video, I am going to provide you 15 different advanced English level expressions or idiomatic structures that you may use in any of your casual setting or at your workplace. So in my last video, I told you this thing that learning idiomatic structures or understand their meaning could be really challenging for some individual. However, if you're going to learn their meaning or understand the context in which you can use them through a short story or any script or dialogue conversation, so it would be much easier for you to understand their meaning and then you can use them accordingly. So we are going to do the same practice in this video as well. That first of all, I will provide you all the 15 advanced English level expressions, and then we'll read a script together in which we will be using all those 15 advanced idiomatic structures so that you would be able to understand their usage accordingly. So in the end of this video, I will provide you a PDF which will have each and everything, so you do not need to write down anything. Just watch this video till the end carefully, and in the end of this video you will have the PDF. Obviously I will send you the link and it will be included in the description, so you can revise each and every concept after the video in case if you miss anything. So the first one is to miss the boat. To miss the boat means to miss a chance or an opportunity. होता है ना कभी कभी हम लोग कुछ opportunities को या कुछ chances को अपने हाथ से गवा देते हैं, miss कर देते हैं. So there in this context you can use to miss the boat. Like for example, I can say that it's a great opportunity for me, like in terms of job or anything, and I think that I should not miss the boat. The next one is to be up in the air. To be up in the air means when you are uncertain about something. कभी कोई ऐसा सिचुएशन हो कि जिसके अंदर आप श्योर ना हो किसी चीज को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, या सामने वाला अपने एक्शंस को लेकर श्योर ना हो. So there in this context you can use it to be up in the air. Like for example, you can say that when I was applying to different universities, so back then at that time I was up in the air about my choices. The next one we have is to stab someone in the back. इसका मतलब होता है to betray someone who was very close to you. होता है ना कभी कभी कुछ लोग किसी को धोखा दे देते हैं, जैसे आज तो ये सब कुछ बहुत ही कॉमन है, लोग बड़े आराम से बहुत अनअपोलोजेटिकली किसी को भी धोखा दे देते हैं. तो जब हम किसी को धोखा देते हैं या हमें कोई धोखा देता है एंड दैट पर्सन वाज वेरी क्लोज टू अस, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टू स्टैब समवन इन द बैक. लाइक फॉर एग्जांपल, जैक एंड आई वर सो क्लोज टू ईच अदर बट ही स्टैब्ड मी in my back multiple times by lying. The next one is to lose your touch. To lose your touch का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा काम या ऐसी एबिलिटी जो आप पास में बहुत अच्छे से किया करते थे, आपके पास ये सलाहियत थी, लेकिन अब आप में वो बात नहीं है. कभी कभी हम किसी तरह से किसी को बात करते हुए कहते हैं कि यार पहले तुम ये काम बहुत अच्छे से किया करते थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, अब मजा नहीं आता. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर idiomatic structure to lose your touch. Like for example, he used to be a very famous football player or footballer, but now he has lost his touch. यानी कि अब उसके अंदर वो बात नहीं है, अब वो इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेलता. The next one we have is to face the music. To face the music का मतलब होता है when someone face the consequences of their actions. यानी कि मैंने कोई काम किया, कोई एक्शन किया और अब मैं उसके नताइज को झेलूंगी ऑब्वियसली आने वाले फ्यूचर के अंदर. So this means to face the music. Like for example, I can say that because of some horrible mistakes of the company CEO, now the company's employees need to face the or have to face the music. यानी कि जो कुछ भी कंपनी के सीईओ ने किया, अब उसके नताइज उस कंपनी के एम्प्लॉइज को झेलने पड़ेंगे. So there you can use to face the music. Another one we have is crunch time. Crunch time का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिसमें जीतने का जो प्रेशर है वो बहुत हो. A period when to win or the pressure to win or to succeed is great. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को बिल्कुल इख्तिताम पे ला रहे होते हैं, उसे फाइनल कर रहे होते हैं, लेकिन जो जीतने का या जो कंप्लीशन का एक प्रेशर होता है हमारे माइंड पे वो बहुत ज्यादा होता है. So that period is basically called the crunch time. Like for example, we can say that we were experiencing a crunch time at the final stages of our final year project.
The next one we have is get out of hands. To get out of hands का मतलब होता है जब कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए, यानी कि आप उसको कंट्रोल ना कर सकें, तो उस सिचुएशन में आप यूज करते हैं टू गेट आउट ऑफ द हैंड्स। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि यार वो सिचुएशन ऐसी थी कि चीजें मेरे हाथ से निकल जा रही थी, यानी कि मैं उनको कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, तो इस सिचुएशन में हम टू गेट आउट ऑफ द हैंड्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ये यूज कर सकते हैं, लाइक द पार्टी गॉट आउट ऑफ द हैंड्स व्हेन मेनी पीपल शोड अप, यानी कि जब इतने सारे लोग पार्टी के अंदर आए तो फिर वो पार्टी मेरे हाथ से निकल गई, यानी कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। Okay, now this one's my favorite. The next one we have is to get out of your system. कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे होते हैं अपने अंदर, कुछ नेगेटिव इमोशंस की वजह से या नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से हम अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, बहुत हैवी फील करते हैं। लेकिन जब हम अलाउ करते हैं अपने आप को कि हम किसी से बात कर सकें या वेंट आउट कर सकें, तो हम अपने सिस्टम से निकल के या किसी से बात करके अपने आप को हल्का फील करवाना चाहते हैं। सो इस सिचुएशन में हम ये वाला इडियम यूज कर सकते हैं, टू गेट आउट ऑफ योर system. Like for example, you can say that I was so upset due to some tension or some sort of problems at my workplace, so I decided to get out of my system by expressing myself to my friend. यानी कि जब मैंने ये decide किया कि मैं अपने friend से बात कर सकूं, so at that time I decided to get out of my system. Now the next one we have is to hang in there. To hang in there basically to अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। The first one is when you wait for someone, या जब आपको कहा जाए to wait और टू बी पेशेंट, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हैंग इन देयर को यूज करना बिल्कुल ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक योर सेंटेंस दैट द बॉस वाज सो लेट और टू लेट फॉर द मीटिंग, सो दैट्स व्हाई बिकॉज वी हैड नो अदर चॉइस, सो वी हैड टू हैंग इन देयर फॉर अनदर आवर, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, हमें वेट तो करना ही था बॉस का, तो इस वजह से हियर यू कैन इजिली यूज टू हैंग इन देयर, क्योंकि हमें उनका इंतजार करना पड़ा। Another one we have is to throw caution to the wind. To throw caution to the wind का मतलब होता है कि when you are ready to take a risk, जब आप तैयार हो रिस्क लेने के लिए, तो उस वक्त आप ये idiomatic स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। Now what is the example sentence? Example sentence could be that I know that I haven't prepared myself much for the marathon, but still I am ready to throw caution to the wind and I will run. So जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, so there easily you can use this particular structure. Another one we have is call it a day. ये बहुत ही आसान है, इसका मतलब सिंपली ये होता है to stop working. Like for example, if you say that we have been here for like about 10 hours and we are continuously working, so now let's call it a day. यानी कि आप बहुत देर हो गई काम करते हुए, आप बस खत्म करो, stop working. So they are easily, very simply you can use like call it a day. Another one is to be on the cloud nine. To be on the cloud nine simply means when you feel extremely happy, elated, इतने ज्यादा खुश कि खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो, तो वहां पर आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। Like for example, I was on cloud nine when they accepted my job application. Yay! The next one we have is under the weather. Under the weather का simply मतलब ये होता है when you feel extremely sick or when you are ill. आजकल काफी ज्यादा लोग इस idiomatic structure को बहुत आसानी यूज कर सकते हैं क्योंकि सभी बीमार हैं। So to feel under the weather means when you are sick. Like for example, you can make your sentence that last night I didn't show up to the party because I was feeling under the weather or I was under the weather. The next one we have is to sit tight. To sit tight का मतलब होता है to sit quietly, firmly at one's place and refrain taking any action and you do not change your mind either. यानी कि आपने कुछ काम किया और अब आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, अब आपको सिर्फ वेट करना है अपने रिजल्ट का। Like for example, you can make your sentence that after taking the exam, I had to sit tight for the results. जब आपने एग्जाम अपने ले लिए, अपने एग्जाम में अपियर आप हो गए, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज योर माइंड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब आपको बस खामोशी से बैठ के अपने रिजल्ट्स का वेट करना है। सो देयर यू कैन वेरी सिंपली एंड वेरी इजली यूज टू सिट टाइट. And the last one is very funny and that is to speak of the devil. Speak of the devil को basically हम normally भी represent करते हैं काफी ज्यादा. We are quite used to of using this expression and that is जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो and when that particular person actually arrives, जब वो actually में आ जाए. Like for example, आप किसी के बारे में gossip कर रहे हैं and you would be like, oh, speak of the devil, we were just talking about him. तो आप उसी के बारे में बात कर रहे थे और वो अचानक से आ गया. So there easily you can use speak of the devil.
So now that was it. I have provided you 15 different advanced English phrases or idiomatic structure, and now it's time to read a script together. So now let's get into it. A script. Hi Jack, how have you been? How was your session with your therapist yesterday? Hi Matt, it was amazing, as usual. Wow, that's great. I was wondering if I could also be a part of those sessions. Although things are still up in the air, but I am planning to go for it. I wish I could say yes to you, but you have missed the boat because all the slots are occupied now. Oh, sigh. Actually, I need these sessions badly. I am depressed these days a lot. Like one of my closest friend has stabbed me in the back, and all the time I am thinking about it. I used to be a strong personality in my past, but I guess I have lost my touch and get easily upset these days. Oh, I'm so sorry to hear this. Whatever your friend has done to you, he will definitely face the music in future. You just need to hang in there. Hopefully, but things are getting out of my hand now and I need someone to talk to get out of my system. You will. Just sit tight. Okay, now let's talk about something else. How are you getting on with your project? Yeah, I am experiencing a real crunch time. Like my project is almost final, but one of my team member has quit because he's under the weather. So now I have to do his part as well. However, there are few things I am not sure about, but I am planning to throw caution to the wind. Wow, I am on cloud nine to see your dedication, but you have already worked a lot for today. Let's call it a day. Let's make a plan for a flick today. Are you out of your mind? Like my supervisor may call me anytime for presenting my progress report to him. And here you are talking about a flick? Oh, speak of the devil, and he's here. We were just talking about him. Okay guys, so thank you so much for watching our video. Thank you so much for being present in this session, and I hope that you guys have found this video helpful and you enjoyed it as well, because whenever I try to teach someone, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा बोरिंग या डल ना बनाऊं, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ह्यूमर या कुछ ना कुछ ऐसा मसाला ऐड करूं ताकि मेरे सुनने वालों को मुझे सुनना बोरिंग ना लगे। और क्योंकि जहां हम इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पीक तो हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में अच्छा बोलने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ एक्सप्रेशंस को सीखना पड़ता है, और सीखना यूजुअली लोगों के लिए आजकल डल है क्योंकि हर कोई बहुत क्विक और ईजी जो है वो स्टेप्स के थ्रू हर चीज अचीव कर लेना चाहता है। तो मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसके अंदर कुछ ह्यूमर या कोई ना कोई ऐसा टीचिंग स्टाइल रखूं कि जिससे मेरे सुनने वाले, जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा टेडियस इस चीज को फील ना करें और वो बहुत ज्यादा बोर ना हो। तो ये मेरी पूरी कोशिश होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon so that you would never miss on any update. Please share this video with your friends, with your mates, with your colleagues, and with your family member. And if they like our content, so please ask them to subscribe to our YouTube channel. Thank you so much, and please stay tuned and keep learning with Hisam Academy.